Hello everyone, in this video we are going to talk about the chapter The Night Meal. This is the first chapter. In this book this is the fifth chapter, but we are going to learn as a first chapter because in class 9 this is in the portion this is as first chapter. So let's move, and this is a book of treasure chest with a poem and the stories. Before starting the chapter, let's learn about the poet. So, in this poem, the name of the poet is W.H. Auden. The full form is Winston Hugh Auden, as you can read here. Winston Hugh Auden. He he took birth on 21 February 1907 and a death anniversary on 29 September 1973. He is both British and American, means he he live in British as well as in America, so he is a British American poet. He was born in England. Okay, he was born in England, and he belongs to the professional middle class family, as we are, as I am belongs to the middle class family, so he is professional middle class family, right? So this paragraph is, and with her birth, the name, her name, his name, her birth, when he took birth, her death anniversary, from where he belongs, and where he took birth. So in this para you can only see when he took birth, when he died, and who he is, and the second one, where he took birth and from where he belongs. So he belongs to the professional middle class family. Second, he is saying that he attended various English independent, मतलब वो जो थे वो बहुत ही इंग्लिश इंडिपेंडेंट स्कूल में उन्होंने अपने स्टडीज़ कंप्लीट की, राइट, जो कि एक क्राइस्ट चर्च का था, एज यू कैन सी हियर. क्राइस्ट चर्च का एक स्कूल था. ही अटेंडेड वेरियस इंग्लिश इंडिपेंडेंट, और वी कैन से पब्लिक स्कूल, एंड स्टडीड इंग्लिश एट क्राइस्ट चर्च, ऑक्सफोर्ड, राइट. आफ्टर अ फ्यू मंथ इन बर्लिन, कुछ साल बाद, और वी कैन से आफ्टर अ फ्यू मंथ, महीना, कुछ महीने बाद, इन बर्लिन, अब वो बर्लिन में थे. ही स्टार्टेड टीचिंग इन ब्रिटिश प्रोपेट. प्रोपेट मतलब होता है प्रिपरेट मतलब होता है फ्रॉम क्लास 7 to 10. इट इज़ कमिंग अंडर प्रिपरेट. तो इन बर्लिन ही टीच ब्रिटिश from class 7 to 10 school. Then he traveled to China and Iceland and China. He traveled and wrote a book about his journey. So what we saw in second para, we saw that in English he attended various, first he studied itself in where, at Christchurch, Oxford. Then he teach in Berlin, British, in the preparate schools. Then he went to the China and Iceland to wrote book about his journey, right? In this in this third para, he told that in 1946, he retaining his citizenship in ब्रिटिश. वो ब्रिटिश में, मतलब कि वो रहते थे ब्रिटिश में, एंड बिकम द सिटीजन ऑफ अमेरिका, मतलब कि वो अपना सिटीजनशिप ब्रिटिश से छोड़े नहीं थे. वो अभी अमेरिका में रह रहे थे, लेकिन एज वेल एज ही इज़ लिविंग इन, बिफोर ही वॉज लिविंग इन ब्रिटिश, एंड व्हेन ही केम टू द अमेरिका इन 1946. Okay, after that the second point is he taught in America University until his death. वो अमेरिका में अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे अपने मरते दम तक. फिर वो विंटर में चले जाते थे न्यूयॉर्क में, और समर में आ जाते थे क्रिस्चेस्टर में. क्रिस्चेस्टर जो कि है लोअर ऑस्ट्रिया, राइट. नाउ इन द फोर्थ पैरा ही टोल्ड दैट he wrote a book about political and social theme on September 1, 1936, right.
ही रोट अ पॉलिटिकल थीम, उनका क्या था, एक पॉलिटिकल और सोशल थीम था जो कि उन्होंने लिखा था सितंबर 1939 में, जिसका नाम था द शील्ड ऑफ आर्चिलीज। द शील्ड ऑफ आर्चिलीज, द शील्ड ऑफ आर्चिलीज, right? And first he wrote about the love, he wrote a book about her love, his love, not his love, about the, जैसे कि किसी भी स्टोरी या फिर पोएम whatever, उन्होंने बुक लिखा था लव के ऊपर जिसका नाम था फ्लोरल ब्लूज, फ्लोरल ब्लूज। Now second he wrote about the theme political and social, its name is The Shield of Achilles. Third he wrote the book about cultural and physiological theme. Its name is The Age of Anxiety. These are very important points what you should know. The Shield of Achilles about the political and social theme, and third he wrote about the cultural and physiological theme, that is The Age of Anxieties, right? Now in next para it is talking about his film. So Night Mail described to produce film which will be seen modern in public faces, right? Night Mail जो था वो डिज़ायर था उनका, ताकि उसके ऊपर वो फिल्म बना सके। नाइट मेल जो वी आर गोइंग टू लर्न पोम, what we are going to understand about poem, that poem he want to make a film which will be seen as a modern in public faces. public face जितना उसको अच्छे से देखेगा, जितना पब्लिक उसे देखे, उतने अच्छे से फिल्म के थ्रू और अच्छे से समझेगा, राइट? सो दैट पीपल कैन ट्रस्ट इन पोस्टल सिस्टम। तो ये आपके क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड राइटिंग द पोम द नाइट मेल, right? It can ask what is the theme of the poem The Night Mail. You can say that the Night Mail poem was written by W.H. Auden or Winston Hugh Auden, because, or we can say, so that people can trust in postal system. आप इसको जब ये पूरा पढ़ोगे, then you will get whole about the theme why he wrote this poem, right? In your workbook this question is being asked, so, or we can say in exam this question will ask, right? Let's move to the next point. नाइट मेल पब्लिश हुआ था 1936 में, फिर उतना ज़्यादा वो फेमस नहीं हुआ, फिर उसे रिपब्लिश किए 1966। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, नाइट मेल पब्लिश हुआ था 1936 में, फिर उसको रिपब्लिश हुआ 1966 में, एंड इज़ द पोएम बाय W.H. ऑर्डन। ये पोएम लिखे हैं, कौन लिखा है? W.H. ऑर्डन, ऑल नोज, रिटन इन 1935। देखो, पोएम लिखा गया था 1935 में, पब्लिश हुआ और वो पहली बार पब्लिश हुआ 1936 में। उसके बाद उन्होंने रिपब्लिश किया 1966 में, राइट? आफ्टर दैट व्हाट हैपन, अब so up to here we know about this para. It is not full para. That Night Mail is written in year 1935. It is been published in 1936. After that it is republished in 1966. यहाँ तक समझ में आ गया? और उसको जब वो रिपब्लिश हुआ, उसको सेम टाइटल मिला, नाइट मेल। इसके डायरेक्टर थे हैरी वॉट एंड बैसिल राइट। यू कैन रीड हियर दिस पोएम डायरेक्टर इज हैरी वॉट एंड बैसिल राइट। और ये बैसिल राइट इस समय के पोएट थे। कौन थे जब ये पब्लिश हुआ 1936 में, राइट? आफ्टर डैट प्रोड्यूस्ड बाय, अब इसको प्रोड्यूस कौन किया था? इसको प्रोड्यूस किए थे आपके GPO, मतलब जनरल पोस्ट ऑफिस फिल्म ने इसे प्रोड्यूस किया था, राइट? नाउ नेक्स्ट पैरा इट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट द रिदम, and this rhythm
देखो अब हिंदी में बोलते हैं ताकि सो दैट यू कैन नो वेरी इजी। एक ट्रेन है, राइट, एक ट्रेन है, वो मूव करता है बहुत तेज, तो उसका जो आवाज़ आता है, उसका जो रिदम आता है ट्रेन के व्हील का, ट्रेन का जो पहिया होता है उसका जो आवाज़ आता है, छुक 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 आता है ना। एंड द स्टॉप वॉच, आप जो क्लॉक है आपके रूप में, उसको यहाँ पे डिक्लेयर किया गया स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच का आवाज़ होता है टिक 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 टिक, और उसका छुक 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 छुक, दोनों को मैच करके एक फिक्स्ड एग्जैक्टली रिदम बनाया गया था, और जो कि उस पोएम में उस फिल्म में डाला गया था। नाउ नेक्स्ट पैरा you can read here. He passed it to match the rhythm of the train wheel with the stopwatch in order to fix it exactly to the spot. It is celebrated as the classic example of film soundtrack was in English. It means it is celebrated as English film soundtrack, which is classic. और उस क्लासिक को कहते हैं, क्लासिक मतलब होता है बेस्टेस्ट, मतलब अच्छे से भी अच्छा। सो हम लोग इसको मनाते हैं एज अ इंग्लिश फिल्म साउंड विच इज़ क्लासिक। इसको विच इज़ क्लासिक को बताया गया बेस्टेस्ट, अच्छे से भी अच्छा। पहले इसको डिस्क्राइब किया गया था एज अराइवल ऑफ नाइट ट्रेन। पहले in first it is described as it is a arrival of night train, which being the LMS postal special train from London to different cities, right? So in this para you will only get that it is being celebrated as English film soundtrack which is classic, which is bestest. Is in first it has been described as a night mail which is moving from London to different cities, and different cities you can see here, from London to Western to different cities is being talked about here, right? Like that, this is a full para, full which we have talked here. So just remove this. We have talked about. This is very important, और जो main important इसमें आता है is that what is the theme of this poem. Now in this video we will only talk about the poet. In next video we will talk about the night meal, right? So thank you for listening me. Thank you so much.